Assalamualaikum 5 class. Today our topic is other invertebrates. I have told you about invertebrates. What are the invertebrates? Today's are there some examples. First one is molluscs. Some molluscs live on land but most live in water. This is a type of an invertebrate. There are some examples: oysters, snail, octopus and clam are example of molluscs. Clear? This is a clam. This is a octopus. It has 1 legs, and this is a snail. These all are live in water. Some molluscs are live also on land. Next one, sponges. Sponges are the simplest form of animal. You know, sponges are a type of animals that have no nervous system and no muscle. So and also they live in the फ्लोर ऑफ द सी. ये अंडर द सी के अंदर जो बिल्कुल एंड पे तय होती है फ्लोर होता है, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं और इसके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता. क्लियर? नर्वस सिस्टम आपको पता है कि हमारा तमाम बॉडी का जो बोन्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन है, वो नर्वस सिस्टम बनाता है. और ये जो जानदार है, लिविंग थिंग है, स्पॉन्जी, इसके कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता और ना ही कोई मसल होता है. They do not have a nervous system or any muscle. I have told you. They cannot move on their own and most live on the sea floor. They can't move and they live on the sea floor. Because they can't move, they can't hunt for food. Obviously, they have no foot, no legs, so they can't move. So how they can hunt for food? How they live, how they grow, we are reading here. Instead, they live on the water that flows through tiny holes in their body. There are very small tiny holes in their body. You can see these are the holes, and through these holes they absorb the water, and you know that water has oxygen, so that oxygen help them to nourish themselves. Clear? That nourishment is help to survive them. The water contains the oxygen and nourishment they need to survive. Clear, students? Now worms. Worms are also a type of invertebrates. Worms are divided into 3 groups. Most commonly known as segmented worms, flatworms, roundworms. There are some examples. This is a segmented worms. This is a flatworm. This is a roundworm. How we can recognize this is a segmented worm? If you have seen a cockroach, they have the line segments on their body. ये इस तरह से इनके ऊपर लाइन्स बनी होती है, सेगमेंट्स बने होते हैं. दिस इज कॉल्ड द सेगमेंटेड वर्म. फ्लैट वर्म्स, दीज आर फ्लैट. ये चिपटे होते हैं. आपने अगर बारिश के बाद देखा हो तो फ्लैट वर्म्स जो है वो बाहर निकलते हैं, वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं. क्लियर? दिस इज अ राउंड वर्म. ये बिल्कुल राउंड होते हैं और ये ज़्यादातर वाटर में होते हैं और ये अपने बॉडी को राउंड शेप में कर लेते हैं. क्लियर? नाउ दिस इज द अकाइनोडर्म्स. Echinoderms live in water. Starfish and sea urchins are examples of echinoderms. These are the type of echinoderms. Echinoderms भी वाटर के अंदर होते हैं और इनके बॉडी के ऊपर भी ये हॉल्स बने होते हैं. इनके भी एक स्पेसिफिक होते हैं हॉल्स जो कि इनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में. क्लियर? यू नो, स्टारफिश के अंदर एक और भी अकाइनोडर्म्स में होते हैं. अगर इसकी कोई भी एक पार्ट जो है, कोई भी हिस्सा जो है ये कट जाता है तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपने आप को दोबारा से ग्रो कर लेता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नाइडेरियंस लिव इन वाटर. दे हैव अ बैग लाइक बॉडी. दीज आर द नाइडेरियंस एंड दे हैव अ बैग ऑन देयर बॉडी. ओके, which has tentacles coming off it. They have the tentacles. इनके अंदर से tentacles होते हैं, खास किस्म के एक झाड़ी टाइप, वो tentacles होते हैं. और वो जो tentacles होते हैं वो बहुत dangerous होते हैं. They have a lot of poisonous in them. And cnidarians include jellyfish and coral. This is a jellyfish. This is a coral. You know that scientific fact, the most deadly jellyfish is a box jellyfish. It has a large bag that have a lot of poisonous in it. Each of its tentacles has about 500,000 poisonous needle-like spines. You know that जो tentacles होते हैं वो झाड़ी की तरह एक बड़ी बड़ी needles होती हैं और वो एक needle के अंदर 500,000 poisonous होता है. Now you can think that how much dangerous is it.
There are some questions from the whole topic, from the whole unit, because the unit is on endpoint. Yes. Why do scientists put organisms into different classes? You have learned in your notes is what is another word for animals with a spine, without a spine, and here are some all other questions that are related to your full unit. So learn them from your unit and learn this topic very carefully. Thank you so much.